Yes, so in this video, we will discuss the current electricity from 12th standard. In between हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी डिस्कस कर रहे हैं, पैरेलल करंट इलेक्ट्रिसिटी भी डिस्कस करते जा रहे हैं. एक्चुअली current electricity, obviously it is different than the electrostatics, because in electrostatics charges are at rest, means they are not in motion, while in current electricity the charges flows through the conductor, and that is called the electric current. And we are taking one interesting topic in this chapter, that is drift velocity. See, drift velocity is very interesting topic. Actually, here in this topic, actually they gave the idea about the uh, drift of electrons. It means motion of the electrons inside the conductor when we supply the voltage through the battery. ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. बट उसके पहले थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं कि व्हेन देर इज़ नो एक्सटर्नल सोर्स और व्हेन देर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड, देन व्हाट हैपन टू दिस. तो पहले वो एक डिस्कस कर लेते हैं. वी आर टेकिंग वन सिंपल एग्जांपल ऑफ मेटालिक कंडक्टर. So here we are taking one metallic conductor, and see, in metallic conductor, obviously positive ions are fixed on their lattice points. So positive ions are fixed, and obviously they are heavy in mass as compared to electrons. Electrons are lighter, and especially in metals, the valence electron or outermost electrons are very loosely bound with the nucleus, and that's why we are called it free electrons. Actually हम इसीलिए उसको free electrons बोलते हैं. But they are free to move within the metals. They cannot come outside from the metal, because we are not giving any external field. We are talking in the absence of external field. It means we are not giving any external force, and that's why these electrons are free to move within the metals. They cannot come outside from the metal. Here also we can say that these positive ions are actually producing the negative potential for this type of electrons. Why negative potential? Because see, these positive ions overall, whole positive ions will exert the attractive force on the electrons which tries to come out from the surface of the metal, and that attraction, it gives the idea about the negative potential energy. Because see, attraction, it means they are in bound state. It means electrons or free electrons or the outermost electrons or valence electrons are in bound state. उसको कौन बाउंड करके रख रहा है? पॉजिटिव आयंस. सो ये बाउंड स्टेट जो है, एक्चुअली इट हैज़ सम एनर्जी. ये बाउंड स्टेट आया कहाँ से? तो कि भाई अट्रैक्शन से. अट्रैक्ट कौन कर रहा है? दिस पॉजिटिव आयंस. किसको कर रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को. एक्चुअली दिस अट्रैक्शन or force of attraction gives the negative potential energy, and that is called the binding energy. So this energy is the binding energy of the electrons. So electrons are free to move within the space between the positive ions, but they cannot come outside from the metals because of this bound state or binding energy. Now what happen when we give the external field? अच्छा, एक्सटर्नल फील्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैटरी तो चाहिए. लेकिन देखो, एक बात ये भी है कि एट रूम टेम्परेचर, देखो यहाँ पे दो बातें हैं. एक्सटर्नल फील्ड इज ज़ीरो. इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड. एट रूम टेम्परेचर,
obviously this free electrons has thermal velocity. This free electrons have thermal velocity. So these electrons have thermal velocity. Okay, and obviously thermal velocity, and because of this they perform the incessant random motion. And because of this their net velocity is 0. And here net velocity is 0, it means current is 0, because there is no velocity, net velocity, so net current is also 0. ये हमने जितना भी डिस्कशन किया, this is all when there is a no external field applied to the conductor और metallic conductor. अब थोड़ा सा इसको हम ले जाते हैं कि भाई when we connect the battery across the two ends of the conductor, something like this. Obviously this is the symbol of DC battery. This actually a longer line shows the positive potential while shorter line shows the negative potential. This is potential difference V. Obviously current flowing through the circuit, and see, this is conventional current. It is the flow of positive charges. Now obviously electrons inside the conductor gets attracted towards the positive end of the battery. ये तो सीधी सी बात है कि electrons are negatively charged. But see, there are positive ions are also inside the conductor. सेम हम इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसी को हमने यहाँ पे लिया है और उसके साथ बैटरी हमने कनेक्ट किया है. अब देखो, this positive of the battery attracts the electrons negatively charged particles. Initially क्या था कि भाई they are performing random motion due to room temperature and it has some thermal velocity, and when we do the vector sum of the thermal velocities of all the electrons we will get the net velocity 0. That's why current 0. But when we connect this across the two ends of the battery, means when we connect the battery across this conductor, electrons gets attracted towards this positive potential of the battery. But when it travels through the conductor, it suffers the collisions with the positive ions. Collisions, it means this positive ions will attract this electron, but this positive potential attract towards it, right? So यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव जो बैटरी का है उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है. इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ पे आ रहा है, बट बीच में जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं, जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, हर एक पॉजिटिव आयंस क्या लगाएगा, उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा. तो वो क्या कर रहा है कि जैसे पॉजिटिव आयन ने उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाया, लेकिन बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है. अब जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, जैसे व्हेन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं हम, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज मोर देन द attraction of this positive ions, then electrons get slowly attracted towards the positive of the battery. बट ऐसा भी नहीं है कि पॉजिटिव आयंस उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसको ट्राई तो करेंगे रोकने की, बट इलेक्ट्रॉन्स फिर भी फ्लो तो करेंगे बिकॉज ऑफ हाई पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर. It suffers the collisions with the positive ions, and during collisions it loses some energy, जिसको हमने बोला है हीट एनर्जी. कोलिजन में क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसको हमने I2RT से हीट एनर्जी ऐसा भी बोला है.
दूसरा ये है कि व्हेन देर इज़ अ कोलिजन देर इज़ अ अपोज, पॉजिटिव आयंस क्या कर रहे हैं, उसका अपोज कर रहे हैं, उसको बाउंड स्टेट से फ्री नहीं करना है, तो क्या कर रहा है उसका, वो अपोज कर रहा है। तो अपोज कर रहा है, अट्रैक्शन है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रहा है। एक्चुअली दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटीरियल। कोई भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टिविटी भी अलग है। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। सो हियर वी आर डिस्कसिंग द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ये जब प्रोसेस हो रहा है कि भाई पहले क्या था, थर्मल वेलोसिटी तो था, वो तो रहेगा ही, बिकॉज रूम टेम्परेचर पे ही हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो रूम टेम्परेचर तो वही है। सो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ही बात हो रही है। सो दे हैव थर्मल वेलोसिटी, बट नाउ दे हैव एडिशनल वन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Here electrons gets drift towards the positive potential of the battery, and this drifting is actually given by this equation, very simple equation. See, Vd is the symbol for the drift velocity, is equal to 0, because initially कोई drift नहीं था when there is no external source or battery, plus a इंटू टाउ। ये टाउ क्या है वो भी देखते हैं। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे बना, रेडी, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ, बस। ओके, अब ये क्या है, कैसे आया, वो हम इसको समझते हैं क्या है। देखो, पहली बात तो कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, उसका मतलब देर इज़ नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस, बिकॉज नेट वेलोसिटी क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। एक्सेलरेशन जैसा कुछ यहाँ पे आया है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टाउ जो है इट इज़ द रिलैक्स। तो देखो, मैंने यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन भी लिखा है, द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द free electrons in a conductor subjected to an electric field is called drift velocity. because पहले एवरेज वेलोसिटी नहीं था, अब यहाँ पे आ गया है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम इंडिविजुअली भी टेक्स्ट बुक में NCERT में दिया है कि हम एक एक का भी लिख सकते हैं कि इनिशियली u1 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू प्लस un डिवाइडेड बाई n, तो वो हमें एवरेज इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगा, बट इट इज़ ज़ीरो। उसके बाद क्या है कि हम एवरेज वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कैन राइट समथिंग लाइक दैट कि v1 v2 v3 अप टू vn, एंड व्हेन वी टेक एवरेज ऑफ देम, सो वी विल गेट v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू प्लस vn बाई n, सो इट इज़ एवरेज वेलोसिटी एंड इट इज़ फाइनली इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं। हियर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, इट इज़ द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एक्चुअली हम लोग 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया है, सेम ऐसा ही कुछ है यहाँ पे बिकॉज थर्मल वेलोसिटी की बात हम कर रहे हैं इसलिए। सो जैसे हम डिस्टेंस में बोलते हैं कि मीन फ्री पाथ इट मीन्स द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स between two successive collision is called mean free path, and time interval for this, time taken to complete this, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि the time interval between the two successive collisions is called relaxation time. तो यहाँ पे ये drift velocity का इक्वेशन आ गया है, ये हमने नोट किया है यहाँ पे। so this is the basic information about the drift velocity। एक्चुअली drift velocity है क्या, पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और इसके बाद हम लेंगे करंट डेंसिटी
और उसका रिलेशन हम डिराइव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम जस्ट इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसे और आगे ले जाएंगे।